तो सबसे पहले अपन एक बार देख लेते हैं अपना कल का व्यू क्या था। यस। मार्केट कहाँ खुल रहा है उस अकॉर्डिंग। टारगेट ये था, यस। रेजिस्टेंस ये था, मार्केट उसके ऊपर खुल रहा है बराबर। बराबर। टारगेट तो थियोरेटिकली अगर देखो इस दिन से अपन यहाँ से अपन अगर फ्यूचर्स या ऑप्शन शॉर्ट करके बैठे होते अपसाइड के लिए, क्योंकि टाइम साइकिल डे था, तो बराबर। पॉसिबिलिटी है कि अपन ये पूरी मूव ले लेते। एब्सोल्युटली। बट यहाँ बीच में कहीं लेना बहुत मुश्किल है। एब्सोल्युटली। Okay? यू वांट टू वेट फॉर अब सम सॉर्ट ऑफ पुल बैक, राइट? इफ आई एम नॉट। हाँ, पुल बैक चाहिए। अब देखो 23,855 खुल रहे हैं, राइट। यस। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप एक बार अपने डाटा पर देख लो, डाटा पर देख लो, यहाँ पर अपन सबसे पहले लाइव कर देंगे, इसको भी एब्सोल्युटली। लाइव कर देंगे। अपने को 855 मतलब 800 और 900 स्ट्राइक प्राइस लगे। बरोबर, 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 वेरी गुड ब्रदर, सीख गए। सीख रहे धीरे धीरे। तो यहाँ पर 23,800, 23,900, इतना ऊपर जा रहा है। यहाँ पर 23,800। दोनों का इंडिविजुअल ओआई भी लगेगा। हाँ, बैंड डेटा। बैंड डेटा। और अगर कहीं कुछ परफेक्ट, सही है। अगर, हाँ, मैं अपन वही ने कर। सब लाइव कर दिया है। करेक्ट। स्ट्राइक प्राइस ही सेव कर दी और सब लाइव भी स्ट्राइक कर दी। प्राइसेस भी सेव कर दी, वेरी गुड, वेरी परफेक्ट। अभी यहाँ पर देखो अपन खुले कहाँ हैं और क्या हुआ है। हाँ। नेक्स्ट लेवल, गैप अप। हाँ। It, I mean, US markets reacted accordingly last night to the statement. बराबर, So there was बराबर, bound to be this kind of market reaction from us also. बराबर। एक बार आप यहाँ भी देखोगे ना, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपन कहाँ खुले, दिस इज हम्म। रेजिस्टेंस के सीधा ऊपर खुलेगा। हाँ, मतलब और जो अपना अगर मैं ये टारगेट था पूरे, या कुछ था, उसका तो हाँ, ऊपर ही एकदम एक्सट्रीम अप पे खुले है। हाँ, और अगर मैं इस पूरे को रिट्रेसमेंट लगाऊं, मैं पहले लगा रहा था बिकॉज दिस वाज इम्पल्स। बट हम्म। इफ दिस गिव्स अ क्लोज नाउ ओवर हियर, आज इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस लेवल हम्म। के ऊपर मान लो, हम्म। तो इट विल मेक श्योर कि भाई ट्रेंड चेंज हो गया, मेजर ट्रेंड चेंज हो गया। बराबर। जो मंथली पे बियरिश था ना, अपन उसका फर्स्ट स्टेप ले लिए कि मंथली पे बुलिश हो रहे हैं। क्योंकि हम्म। जितने दिन में आप नीचे गिरे हो, उससे उतने फास्ट कम आप दिन रिकवर उससे कर गए फास्ट हो। आप रिकवर कर गया। ट्रू। इवन इन एलियट वेव और नियो वेव, इट इज कॉल्ड, नियो वेव में तो इसको टू स्टेप कंफर्मेशन कहते हैं। बराबर। एंड एलियट वेव के अकॉर्डिंग भी आप देखो कि इम्पल्स फास्ट होती है, बराबर, आप सीखे हो। यह सिंपल फास्ट होती है, करेक्टिव स्लो अभी होती अपन ने नहीं सीखा है अभी तक, बट जो भी आप बेसिक सीखे हो, उसमें भी आप सीखेंगे कि इम्पल्स फास्ट होती है। है। ये सिंपल फास्ट होती है। तो ये इतनी फास्ट है कि उसी सारे कैंडल्स कवर कर गए अपन इन हम्म। गैप अप इटसेल्फ। हम्म। ओके, नाउ इट इज जस्ट कोइंसिडेंस कि whatever news is there, whatever is there, बट हाँ। एलियट वेव गेव अस द फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि देखो अपन यहीं से काउंटिंग चालू किए हैं, आप अगर आप वीडियोस देखोगे ना, अपन यहाँ पे रोज काउंटिंग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अपने को पता है ना। हाँ, बिकॉज आप जो प्रीवियस डे एंड ऑफ डे एनालिसिस है और उसके ऊपर जैसे मार्केट जा रहा है पूरे दिन में, और वो करंट डे का एनालिसिस जैसे बंद हो रहा है, उसके हिसाब से अपन नेक्स्ट मूव का कैलकुलेशंस करे या फिर एनालिसिस निकाल रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। अपने को स्ट्राइक प्राइसेस 800 और नौ, सॉरी, 800 और 900 का। अपने को स्ट्राइक प्राइसेस लगेंगे 800 और टेक्निकली नो 24,000, करेक्ट? 800, 900, और ट्वेंटी फोर 700, थाउजेंड 800, 900, दो, 24,000 सब रख लेंगे। अच्छा। Okay? अभी देखो
हम्म। डाटा क्या कह रहा है? अभी आया नहीं फर्स्ट डेटा, आएगा अभी एनी ओके। एनी मोमेंट नाउ। ओके। रेजिस्टेंस है। हम्म। अगर 900 पर भी रेजिस्टेंस है, वेरी नाइस। 800 पर क्या है? सपोर्ट ही होगा। सपोर्ट ही है। हम्म। पी बैठा है, सपोर्ट है। बराबर। इंटरेस्टिंग। हम्म। Scenario 3 from the look of it, but let's see. करेक्ट करेक्ट। 19 लाख 14 लाख है, देखो 19 लाख 14 लाख हम्म। यहाँ पर। सो देखा मैं। मेकिंग श्योर की रेजिस्टेंस ज्यादा है। जोनल डाटा शोज दैट। बैंड डाटा ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, तो बैंड डाटा सेज नीचे। Even in this case, अगर कोई strike price 50 टच करता है, we still don't add, कि we add. क्या कहा क्या कहा? I'm saying strike price में we don't take the ones in the between of the 50 region. 50 वाले नहीं लेते ना अपन। नहीं, फॉर द सेक ऑफ लुकिंग एट द डेटा वी डोंट। हम्म। नाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, आप बताओ। रेजिस्टेंस है एंड इट इज गोइंग अप। मैं I was just going to say. But let us not get ahead. Let us wait Yeah, for yeah. one more At reading least at two least. more readings. Two more readings. Hmm. Two more readings will give us a more clearer picture of what we want to do. Correct. गोल्ड में तो अपना पोजीशन वहां से जो है वो क्या गया है। Crazy. I closed out the buy at 500, 600 pips. कल का दूसरा बाय पकड़ा नहीं बाय फ्यू पिप्स। ओके। फेकआउट टाइप 2 भी बना था अगर आप देखोगे। बना था। दैट्स वेयर आई गॉट स्टॉप्ड आउट ऑन द फर्स्ट ट्रेड, और दूसरा ट्रेड पिक नहीं किया। Okay. बट इट्स ओके, लाइक आई टुक माय टू स्ट्राइक्स फॉर द डे एंड आई एम हैप्पी। हम्म। अरे वाह। टेक अ लुक एट डेटा। वाओ क्रेजी। ये 900 है। हाँ। एंड ये जोनल है। यस। कौन सा जोनल है? ये जोनल है हाँ। फॉर द जोन। हाँ फॉर द एंड जोन दिस इज 800 900 और ये 900 दीज है। आर द बैंड्स। हाँ हाँ, these are the bands, these are the bands. It is not appropriate to stay at a level. That's why we say band. बराबर। When we say a level, it does हम्म not make a sense because in market there is no level. If you see, brother, there are always zones. हम्म। Interesting. Maybe another one more reading, perhaps. Mhm. There are two ways to look at zonal data. You will learn this when we go deeper. Two ways Okay. to learn zonal data. Two ways to read band data. So you Okay. see, in this scenario, if I'm looking for a short side trade, हम्म। I'll be looking at a different zone of data. बराबर।
I'll be checking. I'll teach you later when we go Sure. there. I'll be teaching the upside zonal data, checking the upside zonal data as well. All right. So we have increasing support in the zone, but also a slightly increasing resistance also. Mhm. We're waiting for one more reading. Yeah, not exactly waiting for another reading. Okay. See, what is the impulse side trade? Looking, the impulse side trade is for the upside. Call buy, right? Call buy. Sorry, yeah, call buy. The technical We term. Sorry. take call buy trade. Yeah. You want a put buy trade? You can take a put buy trade right now as well for the downside target of here. Risky. Risky, risky. Full risky. Let's take a look at the premiums. How I, high are the premiums? I was just looking at that. I was just Crazy looking at high. that. Super high. Waiting game. Yeah. Our invalidation level is still at 23,908, right? Mm-hmm. Hmm. Well, that's moving fast. There is no put trade. There is no put trade. There's no put trade. You got the update I sent you in the BPA message? Yeah, yeah. Okay.
Interesting. And we still have support sitting in the range. Yeah, if you check the zonal data of 29, 23,900 to 24,000, Uh, it says resistance. 900 also says resistance. 900 says resistance. And The only problem is if I would get 800 to say that there is resistance over there, the band data, it uh, would make much more sense to buy a put here put and hold for here. barabar. Because Even there's though a we are overbought, even though it is everything, because today is a time cycle time day, cycle day. Absolutely. right? It is It not doing that. If it would had, was a beautiful, perfect trade. perfect trade, yeah. Also, the problem is it is not an impulse trade, so I'm not saying that it is a trade I would give for everyone to take as well. Of course, you And don't I do go not there. want to give many trades. I only want to give a few but quality trades. That's the whole point, right? Mm. Gosh. We're also looking at the zonal data for 24 to 9, 23,900, right? Yeah, zonal data. I'm checking two zonal datas. Hmm. 23,800 to 900, 23,900 to 24,000, and the two band datas of 23,900 and 23,800. Yeah, I have 23,800 and 23,900 also. Yeah. The reason we're checking 23,900 to 24,000 for band data, zonal data is that because we want to see some kind of, Because uh, today is time cycle, no other yeah. reason. So we want to see some kind of confirmation on there that will allow us to take the appropriate trade to that side. Yeah. I'll teach you, brother. We Hmm. have not reached the place Reach where there, yeah. yeah, Yeah. it is not in the part of Ah, intraday that you're learning at the moment. It will come later. no, sure. I'm just observing that how resistance is sitting between 23,900 and 24,000, Hmm. and it's going it's going up. Hmm. Absolutely bonkers today's price action. Approaching our Sorry. invalidation. Hmm. Interesting. And we have some such days also. We have. We have such days also when we know the analysis. We Yeah, have yeah. seen the gap. We have seen the move to the gap upside. And Remember, then I told you you can have 100% analysis, not 100% trades. It is a prime example of that. absolutely. I mean, obviously, not that obviously we look at pure price action and we consider
geopolitical news or political news or anything. बराबर. And basically, mainstream media is a distraction towards price because we've learned to a greater extent that price has already decided where it wants to go. The बराबर. news is just the catapult pushing it towards there. And करेक्ट then करेक्ट, न्यूज there's हमेशा एक ट्रिगर टाइप रहेगा. trigger hai, exactly. And we've learned the hard way through not just one asset, multiple assets, that this is हम्म. always the case. So in today's case also, we had already anticipated price going to the upside in the last हाँ two. हाँ, मैंने कल वीडियो पे भी कहा था ना कि इट हाँ इज एग्जैक्टली, हार्ड की प्राइस नीचे खुलेगा. हाँ इट इज हार्ड की प्राइस नीचे खुले. ये timing, the fact that the news came, they decided to give a 2 week extension, US, Iran, this, that, whatever, XYZ. Coincidence बोलो या जो भी बोलो, मतलब, कि हम्म. alignment बोलो या जो भी बोलो. हम्म. Unbelievable. Take a look. Zonal data says support, Yes. band data says resistance. Resistance. Can you buy? Mm, Zonal No, data says support, and if band resistance says resistance, I wouldn't be too confident buying that. you can't buy. The upside zonal data says resistance. This also Mhm. says resistance. But the downside, we do not have any confirmation that the price wants to go on the downside. Absolutely. बराबर. तो वो भी अपने पास नहीं है कि नीचे जाने वाली है प्राइस, तो अपन उसके लिए भी पुट बाय यहाँ पर नहीं, And यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, और we have to फिलहाल wait अभी now तक for भी that. नहीं कर सकते बिकॉज मेजर प्लेयर डाटा डज नॉट इंडिकेट दैट. अगर वहां से सपोर्ट हट जाता है कोई भी नेक्स्ट रीडिंग में या दो रीडिंग में, तो हाँ, फिर अपने को एक, बहुत अच्छा होगा. हाँ अपने को एक ओपनिंग मिल रहा है, एक हम्म. कंफर्मेशन टाइप मिल रहा है कि भाई वी कैन लुक मूव फॉरवर्ड विद द ट्रेड आइडिया. बराबर. Very interesting. Still, we have a good range of fairly equal amount of support and resistance in the range. हम्म. But our 800 tells us that our support is has been increasing slowly, slowly, and our resistance has हम्म. been fairly somewhat same. And our 900 बराबर. tells us that support has also been increasing slowly, slowly, but at the same time, there was a increasing resistance as well. Wow, beautiful. And 23,900 to 24,000. 24,000 has support and equal and a fair amount of resistance. Not equal, but fair amount of resistance.
So we want to see either the support going away हम्म। or a resistance coming into play. बराबर। I like how the invalidation levels are being played today. हम्म। It moves pretty fast in 15 minutes. Excess और exit तो है किधर? लोअर टाइम फ्रेम पे। नहीं नहीं, हाँ वो सब नहीं, सब नहीं। कोई फायदा नहीं हो देख के भी। हाँ, कोई फायदा अपन अपन नहीं। ऊपर खुले हैं। It's a very low time frame also. Messy भी है प्राइस एक्शन। हम्म। तो मुझे बताओ यहाँ पे कॉल बाय करना सेफ है क्या? Based on increasing support in the range. वैसा नहीं, वैसा नहीं, वो सब भूल जाओ। यहाँ से हाँ हाँ हाँ, यहाँ से तो यस, वी हैव वैसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो। इनवैलिडेशन वुड हैव शिफ्टेड राइट। वैसे नहीं, वैसे इंट्राडे वाला नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, लॉन्ग टर्म बोल रहे हो आप। लॉन्ग टर्म भी नहीं। इतना हाँ अपन गैप अप खुले हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ही अपन कल भी काफी ओवरबॉट थे, यहाँ पर भी कॉल बाय कर ओ कॉल बाय हाँ, करना सही नहीं था। एक डिप के लिए वेट करना है। बराबर। सीधा अपन इतना ऊपर खुले हैं, क्या यहाँ पर कॉल बाय करना सेंस बनता है क्या? नो 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 अगर नो। डाटा भी सपोर्ट करे और सब कुछ हो, क्या इफ यहाँ आई कॉल बाय रिमेम्बर करेंगे? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, आपने जो एनालिसिस डाला था उसके अंदर वी आर इन ओवरबॉट टेरिटरी रेंज। And right now हाँ। we have also opened in overbought territory range, और मेरा जितना भी नॉलेज है आरएसआई के अंदर, this is a extreme overbought territory range, so buying a call buy here is a risky scenario. मौत को बुलावा देने का काम। हाँ भले ही डाटा भी सपोर्ट करे, अपनी खुद की मौत है हाँ यहाँ पर, अपन कॉल बाय करने जाते हो तो एक ही हाँ, चीज है जो अपने को कॉल बाय करा सकती है, वो है ये यहाँ पर। 24,000 range। ओ है। द बैंड डेटा ऑफ 24,000 विच इज नॉट इन फेवर एट द मोमेंट फॉर कॉल बाय। सो उसके एब्सोल्युटली बिना यहाँ पर कहीं भी कॉल बाय करने को मौत है। मत ही करो। मौत, लिटरली मौत है, मैं बेवकूफी है। हाँ हाँ, we are still, I mean, if at all 24,000 or 29,000, either one gives us some sort of a data input, we may take हम्म। the favorable side trade, but right now the it's a distinct trade. राइट ना अपन खतरों के खिलाड़ी बन जाएंगे यहाँ कॉल बाय करेंगे तो। हाँ, नहीं पुट नहीं के लिए इतना बैठे हैं। इतना मैं ओवर। पुट का वेट कर रहा था। नहीं नहीं, मैंने आरएसआई कल ही देखा था रात को, लोअर टाइम फ्रेम पे भी और हायर टाइम फ्रेम पे भी इतना ओवरबॉट टेरिटरी में खुले हैं कि इट्स क्रेजी, मतलब वो पूरा हम्म। लाल है। मैंने एनालिसिस भी भेजा है ना। हाँ, एक बार आप देखा मैंने। टेलीग्राम चेक कर लो। इफ आई जस्ट हैव टू शो यू क्विकली, एक बार देख लो। हाँ, ये है अपना ट्रेडिंग व्यू, और ये है अपना रीडिंग, 30। देखो नीचे। हम्म हम्म। 86। 86 86, मैंने बोला ना वी भले आर इन ही एक्सट्रीमली ओवरबॉट टेरिटरी। एक स्ट्रिप देखो ना पीछे, कहाँ है 86? हाँ यहाँ पे।
ये लेवल ये पे, भी हाँ, 82 ही है अक्टूबर। देखो, ये भी हाँ। 82 ही है। ओ, यस। देख रहे हो एटी राइट टू में? पॉइंट थ्री थ्री बराबर बराबर, यहाँ पे देखा मैंने। हाँ, राइट में वो दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो ये है जब यहाँ खुले हो, हम्म। और बराबर। वो और है उसके बाद एकदम देखो कैसे ऑलमोस्ट, फॉल आया है, या ऑलमोस्ट अ मूव आई। ईयर अगो, ऑलमोस्ट अ ईयर अगो। बराबर। सेम मंथ लास्ट ईयर। तो इफ इट कंटिन्यूज गोइंग अप, लेट इट बी, हम्म। नॉट आर, हाँ हाँ। अपना फेवरेबल ट्रेड नहीं है, सिंपल। हम्म। क्योंकि जो, अरे वाह ये देखो, भाई ओ 20, हाँ ओवर रेट, वही मैं बोल रहा था। ये अच्छा है। स्क्रीन देखो नहीं दिख रिस्क, रहा आपको? अगर आपको रिस्की, अगर आपको रिस्की ट्रेड करना है, यहाँ पर बाय कर सकते हो एक कॉल हम्म। 24,000 का, टारगेट यहाँ पर कहीं। हम्म। प्रीमियम बहुत महंगे हैं। एब्सोल्युटली। एंड देयर यू हैव इट, रिस्की ट्रेड कमिंग थ्रू। 192 से एंट्री है उसकी। हम्म। एंड यू आर आउट। एब्सोल्युटली। बराबर। 192 से 205, हाँ। दैट वुड बी योर इंट्राडे ट्रेड। डन। समझा आपको क्यों किया अपन ने, क्या किया अपन ने? क्या है, बड़ा ट्रेड है क्या, इसको होल्ड करके ले जा सकता हूँ? नहीं ले जा सकता है ना भाई। नहीं। छोटा ट्रेड है, छोटा उसमें काम आएगा।
वी हैव टू गेट आउट हियर बेसिकली एट दिस पॉइंट। हम्म 109 से क्या 206 अगर हम लिया लोग। है आपने तो निकल जाओ हाँ, अभी। नहीं नहीं नहीं। हाँ ऑब्वियसली लिया है ना निकल जाने का। बिकॉज वी हैव टू वेट वन मोर, एक और मिनट रुकना पड़ेगा फॉर रीडिंग टू कम। दैट विल हेल्प अस इवन मोर अंडरस्टैंड व्हाट इज 24,000 से। आई वुड रादर टेक अ सेफ ट्रेड इफ इट कम्स, मतलब परफेक्ट। सेफ ट्रेड के लिए रुकना अच्छा है। या यानी अगर कोई रिस्की ट्रेड मिले ना उससे तो कहीं बेहतर है। और बहुत हम्म देर ये से अपना लेवल 2 वाला ट्रेड था, हाँ राइट? वी आर हाँ। वेटिंग फॉर लेवल 3। लेवल 3, वेटिंग फॉर लेवल 3। यू गॉट इट, कैसे करना है अपने को? हम्म। So that concludes our today's morning trade session. प्रीमियम उतने बड़े नहीं ऐसे, सच बोल। जितना एक्सपेक्ट, बिकॉज जितना फास्ट मूव हुआ और जितना जाना चाहिए उस हिसाब से नहीं गया। हाँ, एक्सपायरी का नेक्स्ट डे है ना आज। हाँ, जितना जाना चाहिए उतना नहीं है। बराबर। प्लस आई एम गेसिंग बाकी सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते ही होंगे कहीं ना कहीं पे, कुछ ना कुछ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल करते हो। डू वी स्टिल वेट? ना ना, रुके ट्रेड तो हो गया है। हाँ ट्रेड तो हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगला कुछ और ओआई डेटा देखना बाकी है तो इसके लिए पूछ रहा हूँ मैं। ना 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 ना, वैसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो क्या होगा आगे जाके मैं बताता हूँ। आज या कल आपको एक बाउंस मिल, डिप डाउन मिलेगा साइड में मिलेगा हाँ। डाउन साइड में। उस पे कॉल बाय करना है हाँ। अप साइड के लिए दोबारा। हम्म, ठीक है। बराबर है। परफेक्ट देन ब्रदर। Alright, brother. Anyway, that concludes our first session. Short, but कंक्लूड्स अपना 6% अपना शायद कोई नंबर मिला है अपने को। पिछले वाले में भी 6% है, इस वाले में भी 6% है। हाँ कुछ तो नंबर होगा वो। फिलहाल प्रीमियम इतने महंगे हैं ना कि 6% ही हो रहा है, प्रॉब्लम है। अरे इनफैक्ट 192 पे एंट्री किया और 206 पे एग्जिट किया ना। हाँ 6.92 मतलब 7 रफली। हाँ बट स्टिल बराबर। आई मीन अपने जब अगर देखा जाए तो भी यू कैप्चरिंग 40 पॉइंट मूव अच्छा ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये मतलब, हाँ नो बिल्कुल डाउट बिल्कुल। ट्रेड रिस्की था तो लेना ना लेना तो इंडिविजुअल बात है, लेकिन हाँ बॉटम अगर लाइन तो देखो ये है। छोटा मार्जिन पे काम कर रहे हाँ हो या फिर आपके पास अलग से स्पेयर मार्जिन है, फेयर तो मार्जिन उस है पे कर तो सकते रिस्क ले सकते हो। हाँ अगर रिस्क एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके चल रहे हो तो हो। तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। सो दैट्स इट, मिलते हैं फिर से अपन कल। कल मिलते दोपहर हैं। में तो अपन बैठते नहीं, बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ वर्क। We have students to take care of. We have videos to make. We have our trading to do as well. ट्रेडिंग टू डू एज वेल। नहीं Right. नहीं एब्सोल्युटली भाई, मिलते मिलते हैं हैं बाद। अपन कल फिर से श्योर लाइव सर। मार्केट वीडियो में। टेक केयर, यस बाय सर। बाय, सी यू सून टेक ब्रदर। केयर, सी यू, बाय बाय। बाय ब्रो।